Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jam Vishnupad Paramahamsa Pravarajagacharya Ashtatrashta Shri Srimad Abhay Charan Bhakti Jantasma Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Nama Acharya Shahridas Thakur ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vas Adi Gaur Bhakta Vrinda ki Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Radha Kun Shyama Kun Giri Govardhan ki Vrindavan Dham ki Mayapur Dham ki Ganga Mai ki Yamuna Mai ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Jai Nitai Gaur Paramananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories of glories to Shri Guru Shri Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 3 and Text 11. Anyatheram vidhasya ham ayatha purvam ojasa kim anyaihi kala nirdhutaihi kalpante vaishnavadibhihi Anyathedam vidhasyeham ayatha purvam ojasa kim anyai kala nirdhutai kalpante vaishnavadibhihi Anyathedam vidhasyeham ayatha purvam ojasa kim anyai kala nirdhutai kalpante vaishnavadibhihi anyathedam vidhasyeham
अपनी कठोर तपस्या से शब्दार्थ अन्यथा बिल्कुल उल्टा इदम यह ब्रह्मांड हितास्य बना दूंगा अहम मैं अयथा अनुपयुक्त पूर्वम पहले जैसा ओजसा अपनी तपस्या के बल से किन क्या लाभ अन्य दूसरे के साथ काल निर्भुते ही काल के साथ समाप्त होने वाला कल्प अंत युग के अंत में वैष्णव आदि भी ध्रुवलोक या वैकुंठ लोक जैसे लोगों से अपनी कठोर तपस्या से मैं पुण्य तथा पाप कर्मों के फलों को उलट दूंगा। मैं इस संसार की समस्त स्थापित प्रथाओं को पलट दूंगा। कल के अंत में ध्रुवलोक भी मिट जाएगा। अतएव इसका क्या लाभ है? मैं तो ब्रह्मा के पद पर बना रहना अधिक पसंद करूंगा। तात्पर्य, देवताओं ने ब्रह्मा जी को हिरण्यकश्यप का आसुरी संकल्प कहा सुनाया। उन्होंने सूचित किया कि हिरण्यकश्यप सारे मान्य सिद्धांतों को पलट देना चाहता है। लोग इस भौतिक जगत में कठिन तपस्या करके स्वर्गलोक चले जाते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि लोग स्वर्ग में सुखी रहें, क्योंकि देवता स्वर्ग में रहते हुए भी उसके विरुद्ध कूटनीतिक विचार रखते थे। वो चाहता था कि जो लोग इस संसार में सताए जाते हैं वे स्वर्ग में भी दुखी रहे। दरअसल वह ऐसा उत्पीड़न सर्वत्र चालू करना चाह रहा था। कोई यह पूछ सकता है कि यह कैसे संभव होगा, क्योंकि विश्व की व्यवस्था तो अनंत काल से चली आ रही है। किंतु हिरण्यकश्यप को घमंड था कि वह अपनी तपस्या से सब कुछ कर लेगा।
यहाँ तक कि वह वैष्णव की स्थिति को असुरक्षित बना देना चाहता था। ये कतिपय लक्षण है उसके आसुरी संकल्प की। Hare Krishna. So here we can see actually the plans of Hiranyakashipu. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं श्रीमान हिरण्यकशिपु की रची हुई योजना। There are very elaborate plans. ये बहुत अच्छे से रची गई योजना है। But as we will see later, and they will not work exactly as he is planning to. पर हम बाद में देखेंगे कि यह ऐसे काम नहीं करेंगे जैसे हिरण्यकशिपु चाहता था। But this is the typical materialist. तो ये भौतिकवाद एक जनरल भौतिकवाद है। Maybe not typical, because this is like really to the extreme. ये एक सामान्य भौतिकवाद नहीं है, ये बहुत अधिक मात्रा में भौतिकवाद है। The materialist, no, he thinks, no, all I want is everything. तो भौतिकवादी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए। So that's what Hiranyakashipu wants. और यही हिरण्यकशिपु भी चाहता था। And now he thinks he has the power for it to get it. और वो यह सोच रहा था कि उसके पास सारी शक्तियाँ हैं यह हासिल करने के लिए। Most people don't have the power, they don't have the money. बहुत सारे व्यक्तियों के पास यह शक्ति या पूंजी नहीं होती। So they have to be humbled down. तो इसलिए वह नम्र बनने लगते हैं। Okay, I don't have the crores of rupees or not to do something to get something. और मेरे पास इतने सारे करोड़ रुपए नहीं हैं कि मैं कुछ कर सकूं या कुछ करा सकूं। I don't have the money to get the latest Lamborghini. मेरे पास इतनी सारी पूंजी नहीं कि मैं सबसे नई गाड़ी खरीद सकूं। So let me get at least the Tata Nano. इसलिए मुझे कोई टाटा नैनो जैसी छोटी गाड़ी खरीद से चलाना चाहिए। So most people don't have the facility to get everything or get a lot. तो बहुत सारे लोगों के पास तो यहाँ सुविधा ही नहीं है कि वो जो चाहते हैं वो हासिल कर सकें। But there is a common principle between those then who have the facility and then who want to enjoy the material facility. तो उनके पास कुछ शक्ति रहती है जिससे कि वो भौतिक चीज़ों को अच्छे से आनंद उठा पाए। So between those and also Hiranyakashipu, there is a common principle. तो वो भौतिक व्यक्तियों और हिरण्यकशिपु के बीच में कुछ समानताएं हैं। What is that? वो क्या है? What do the materialists with the demoniac nature have very common in principle? तो उन दोनों में यही समानता है कि वह आसुरिक भावना रखते हैं। That they think like this. No, why they can even think like this? और वह इसी तरह सोचते हैं और क्यों सोचते हैं इसी तरह? Any idea? Envious? Okay, yeah, you can say. But no. How they are able to even think like this? They think that I am the doer. Okay, well, everybody thinks to some extent. Depends on the false ego, depends on the anarthas, yes. But no, when it goes to such an extreme. Any idea? Yes? Right, I mean, he is, okay, Dhruvaloka will be destroyed, and we will kill Vishnu, and we will establish the Dharma according to me, not as it's supposed to be. So there is lacking something. To be able to think like this, there is a lack of something. And if the thing is in place, then you cannot think like this. What is it? Okay, yeah, somebody is always there. I'm looking for equality.
There is a quality in a person. They are egoistic, like that's why they think like. Egoistic, yes. Everybody is, the ego. Within that, a quality. It's if the quality is present, and in fact, we can even practice. We can develop that quality to not to be like this. What? Surrender to somebody. Surrender. All right. He was thinking that we all think that we are the controller. Yeah, everybody does to some extent. Every materialist does. But what makes you to go beyond even like such a thought that how can Hiranyakashipu think like this? When he has got some power, like a person. Okay, he has a power, but many people have power, but some people think how to abuse the power. No, okay, he has a power to make an atomic bomb and he is going to blow it somewhere. No. Why? Right? It's not right. You were saying something? The question is that why some person develops this demonic quality? Okay, yes, you can say so also. Yes, because he doesn't accept that we were a Swarupa Krishna running with us. We don't think ourselves as servant of the sun. Okay, if you would summarize it in one word, what is it? Or two words, okay. Lord over or leadership. Huh? Next. He wants to become God. Of course he wants to become God. But why is he thinking like that? He forgets Krishna and like to enjoy himself. Only conscious. He's very conscious, forgets Krishna, fine. He didn't want to enter anyone into his domain. Enter into? His domain. Because he is attached to all this person. Everybody is attached, not again to some extent, but what is it? Look at this. He has lack of respect for anyone. Position of Vishnu, he doesn't respect. Anybody else, he doesn't respect. He has a lack of respect for anyone. He respects only whom? Himself. So, due to the lack of respect for other living beings, then he is developing, I'm going to control everyone. I'm going to abuse. If I want, I kill. If I want, I create. It's up to me. I don't care for anybody else. And later on we will see, when he deals with Prahlad, his own son, does he have respect for him? No. He is going to kill him. He doesn't care for anyone. And what is Chaitanya Mahaprabhu teaching us? If you want to be Krishna conscious, then Trinarapi Sinichana, Tararapi Sahishana, be tolerant, be humble. Amani namana dena. Right? So, you don't expect things for yourself, but be always ready to give respect to everyone. If you do that, then Kirtanya Sadahari, then you can chant the holy name. Otherwise you cannot. Like we see, it's like Hiranyakashipu, just might be like a little form. Oh, sorry, translate. तो यहाँ प्रश्न था कि हम ऐसा हिरण्यकशिपु सामने तस्वीर सोचते हैं कि हम ऐसी यानी असुर प्रवृत्ति कैसे आती है ये सोचने की। तो उत्तर महाराज ने दिया क्योंकि हमारे में दूसरों के प्रति आदर न देने की यहाँ दुर्भावना है। हम दूसरों को आदर नहीं देना चाहते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं तुरंत सुनिश्चय तरोपि सहस्र हमारे मानने कीर्तन सिद्धार्थ, हमें दूसरों को हमेशा मान देना चाहिए, खुद की कोई मान की आशा नहीं रखनी चाहिए और हमेशा हमें सहनशील और नम्र बने रहना चाहिए। So, 2 days ago we were talking a little bit about the respect for the living entities.
And if that's developed, then no, you won't necessarily think that you have, even have the capability. You may have a knife in your hand, but you won't think to kill some living entity. तो आपके पास चाकू भी हो सकता है, फिर आप ऐसा सोचोगे नहीं कि आप किसी को मार दोगे. You have to have the wrong, crooked mentality, to think that, yeah, I hate that living entity, no, I'm going to kill that. इसके लिए आपको असुरिक मनोभावना चाहिए, जिससे आप सोच सकते हैं कि मैं व्यक्ति को मार दूंगा. And that's what Hiranyakashipu does. और यही हिरण्यकशिपु कर रहा है. No, he hates. Okay, like we said, he's envious. वहाँ ईर्ष्यालु है. He is envious that somebody may have also that power like he has. वह ईर्ष्यालु है कि किसी और के पास भी बहुत शक्ति है जो उसके पास है. So no, the best thing is just to kill that person so that he doesn't become bigger. इसलिए सबसे अच्छा तो यह है कि उस व्यक्ति को ही मार दे, जिससे कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बन जाए. Envy is very detrimental. ईर्ष्या काफी हद तक अच्छा नहीं. And then things go wrong. इसलिए चीजें गलत चली जाती हैं. But as we see that later, because of things not being fulfilled the way he was planning to, इसलिए हम आगे देखते हैं कि जैसे उसने सोचा था वैसे नहीं हुआ, तो so the karma is not fulfilled. So then krodha, lobha, moha, mada. तो जब काम भावना पूरी नहीं हुई तो उसके बाद क्रोध और उसके बाद लोभ आता है. So then now we see how perfectly it works for anyone, even for the biggest demon whoever was there. इसलिए हम देखते हैं कि ये कैसे अच्छे से यह चलता है, कोई भी असर हो. So on the other hand, then if we do develop respect for the Vaishnavas, respect for the Lord, और अगर दूसरी जगह हम देखते हैं, अगर हमारे पास भगवान के प्रति और वैष्णव के प्रति आदर भावना है, तो then all the other qualities will manifest. तो बाकी सब गुण हमारे में आ जाएंगे. So these are the qualities of Vaishnavas. तो यहाँ सब वैष्णव के गुण हैं. That he is respectful to everyone. तो वहाँ सबके प्रति आदरपूर्वक भावना रखता है. So for us, then not to develop the demoniac qualities, we have to look for the respect. तो अगर हम भी आसुरिक गुण ना आए, इसलिए हमें आदर को रखना चाहिए. Respect of others. दूसरों के प्रति आदर भावना रखनी चाहिए. And learn to expect whatever comes in our way. और यह समझना चाहिए कि जो भी हमारे रास्ते में आता है उनको हम आदर भावना देंगे. Learn to practice that whatever comes, then we take it. Be it good, be it bad, now in our eyes, but still, it's done. और अच्छा हो या बुरा हो, हम यह स्वीकार करेंगे. Like we see the example again, Pandavas. उदार के दर के पांडवस, Whatever came through their way, then they accepted it. तो जब उनके रास्ते में भी यहाँ चीज़ आई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया. स्वीकार किया. So, it's not always very easy. तो यह हर बार एकदम सरल नहीं होगा. Of course, if we are to get money, power, prestige, then of course it's easy to accept it. तो अगर हमारी भावना यह है कि हमें लक्ष्मी या शक्ति या बहुत सारी प्रतिष्ठा मिलेगी, तो यहाँ बहुत स्वीकार करना बहुत आसान हो जाएगा. That will give us position and gives us the prestige. वहाँ हमें बहुत सारी प्रतिष्ठा देंगे
और बहुत सारा संपत्ति देंगे। But what if something comes in our way and we lose money, and then we lose the position and we lose the power? और अगर ऐसा होता है कि हमारे रास्ते में कुछ आ जाए जिसकी वजह से हम सारी लक्ष्मी, सारी संपत्ति या सारी प्रतिष्ठा खो दें, then we don't want to accept it. तो हम यह स्वीकार नहीं करेंगे। And then why me? Why me? What did I do? हम यह सोचेंगे क्यों मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। So when something good is coming, of course me, because I am the one who is supposed to get it. तो जब कोई अच्छी चीज़ आती है तो हम यह सोचते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, ये मेरे लिए ही है। But when it comes to if I'm going to be losing something, why me? पर यह जब होता है कि मैं कुछ खोने वाला हूँ तो हम यह सोचते हैं क्यों मैं। And it's always not very easy. और यह हर बार सरल नहीं होगा। I know one devotee. मैं एक भक्त को जानता हूँ। And well, she's mother. वो एक माता है। And at some point in somewhere during an accident, she lost her child, a son. और एक समय पे कहीं पे दुर्घटनावश उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। It was very, very difficult for her to accept that it's Krishna's arrangement. उनके लिए वहाँ स्वीकार करना कि यहाँ कृष्ण की रचना है, वो बहुत ज़्यादा She was finished? कठिन था। She was blaming Krishna वहाँ सारा आरोप कृष्ण पर लगा रही थी for a long time. बहुत लंबे समय तक। Why did you do this to me? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? So it was very difficult time for her. तो वहाँ उनके लिए बहुत कठिन समय था। But after some time, then through the association of devotees, पर कुछ समय पश्चात भक्त संघ के कारण then she was able to accept it, that it was indeed Krishna's arrangement. वह यह स्वीकार कर पाए कि आखिरी में यह कृष्ण की रचना है। Because there was no somebody's fault that the child died. पर यहाँ वो देख पा रही थी कि किसी की गलती नहीं कि वो बच्ची की मृत्यु हो गई। So there was nobody really to blame for it. तो कोई आरोप लगाने के लिए था ही नहीं। And then from that time onwards, then she was able to develop relationship with the Lord. और कुछ समय पश्चात वहाँ भगवान के साथ संबंध प्राप्त कर गए। We see another example what happened to Abhimanyu. हम हमारे उदाहरण देखते हैं अभिमन्यु के दृष्टिकोण में। When he was killed in battle of Kurukshetra. जब मारा गया था कुरुक्षेत्र की भूमि पे। Arjuna was devastated. अर्जुन को बहुत बुरा लगा था। But because he has such a friend as Krishna, who can do anything, so then he was able to actually see that his lamentation, it's pointless. पर क्योंकि वह कृष्ण के सखा थे, इसलिए वह देख पाए कि यहाँ पे इसकी वजह से रोना व्यर्थ है। Why is it that when we lose something, we lament? ऐसा क्यों होता है कि जब हम कुछ चीज़ खो देते हैं तो हम रोने लग जाते हैं? What makes us to actually lament and not able to see things as they are? Attachment. Yes. ऐसा क्यों होता है कि हम यहाँ पे दुखी हो जाते हैं चीज़ खोने की वजह से? It's attachment. यह आसक्ति के कारण होता है। Attachment makes us blind. आसक्ति हमें अंधा कर देती है। There is a possibility of getting something, you get attached to it, you must get it. अगर कोई संभावना है कि आप वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं और आप उनसे आसक्त हैं तो आप प्राप्त करके ही रहेंगे। When you get it, then you will keep it, you will hold on it.
और जब वहाँ आप चीज़ प्राप्त करते हैं तो आप अपने पास एकदम अच्छे से रखेंगे। And when you lose it, then you feel devastated. और जब आप वहाँ चीज़ खो देते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। But what is the difference? Say, sometimes it happens, right? कभी-कभी यह होता है कि Sometimes, like a bank, by mistake, they put a huge amount of money on your account. कभी ऐसा होता है कि कोई बैंक आपके खाते में बहुत सारा संपत्ति डाल देती है। And then, okay, figure out it's a mistake, now take it back. और वहाँ उनको पता चलता है कि यह तो एक गलती थी और वहाँ वापस सारा लक्ष्मी ले लेती है। So you did not have money, then you got money, and then you lost the money. तो पहले आपके पास कोई लक्ष्मी नहीं थी, पर आपके पास बहुत सारी लक्ष्मी आ गई, फिर वह लक्ष्मी चली भी गई। A person is attached. Oh, now I have got $1 million on my account. Now I'll buy this, I'll go there. No, I'll do this. तो क्योंकि व्यक्ति आसक्त है, इसलिए वो सोचने लग जाता है कि मैं ये करूँगा, मैं वह करूँगा, मैं ये चीज़ खरीदूँगा। But then you lose the money again. पर अगर आपको संपत्ति लक्ष्मी खो देते हैं तो Is the person going to be undisturbed? तो क्या वो व्यक्ति विचलित नहीं होगा? Yesterday he didn't have anything. कल उनके पास कुछ नहीं था, Today he doesn't have anything. आज उनके पास कुछ नहीं है। So what's the difference? The difference is that for some moment, now he had huge amount तो क्या अंतर है? पहले उनके पास बहुत सारा संपत्ति था and he got attached to it. और वो उससे आसक्त हो गया He started making plans. और वहाँ बहुत सारी चीज़ें सोचने लगा। Like Hiranyakashipu, okay, I'm going to do austerity now. Now I will demand from Brahma to give me the best benedictions. तो जैसे हिरण्यकशिपु सोचता है कि मैं तपस्या करूँगा और फिर ब्रह्मा जी से सबसे बड़ा वरदान मांगूंगा। That's the demonic nature. वही आसुरी प्रवृत्ति है। So we get attached to that idea. तो हम आसक्त हो जाते हैं ये सब चीज़ों से। But we don't have anything. पर हमारे पास कुछ नहीं है। But no, people can even commit suicide when they lose something. व्यक्ति कभी-कभी आत्महत्या भी कर देता है जब वो कुछ चीज़ खो देता है। Just because they were attached to it. क्योंकि वो आसक्त थे। But there is no difference. They didn't have anything and they don't have anything now. पर इसमें कोई अंतर नहीं है, उनके पास पहले भी कुछ नहीं था और अभी भी कुछ नहीं है। The situation is the same. जो स्थिति वही है। Right? If you buy like a lottery ticket, जैसे कि आप एक लॉटरी टिकट खरीदते हैं। it also sometimes happens that and you buy the ticket, you look at the numbers and yes, it's the first prize. तो ऐसा होता है कभी-कभी कि आप टिकट लेने के बाद देखते हैं तो आपका ही पहला नंबर है। So you think, okay, I won crore of rupees. तो आप सोचते हैं कि आपके पास करोड़ रुपए आ गए। They come to the office and they say, oh sorry, there is a misprint in the newspaper. और आप ऑफिस जाते हैं तो वह व्यक्ति कहता है आपको कि यह तो गलती हो गई थी। What are you going to do? तो आप क्या करेंगे? Okay, yeah, thank you. ठीक है, मैं जाता हूँ। No, you must be wrong. No, this is right. नहीं, पर आप क्या करेंगे? ये गलत है, देखिए वापस देखिए। Person will start fighting. No, I definitely won. I'm sure. मैं जरूर जीता हूँगा, मैं एकदम पक्का हूँ। No, sir, no, there was a mistake. We are sorry for that. No, but immediately get attached to it. सर जी ये मिस्टेक हो गया था, ऐसा गलती हो गया था, आप नहीं जीते। So, if we don't get attached to that idea, तो अगर हम यह चीज़ों से आसक्त नहीं होंगे तो then you can take things and you can let things go and being undisturbed, dhira. तो अगर आपके पास चीज़ें आएंगी और चीज़ें चली भी जाएंगी पर भी आप विचलित नहीं होंगे। So, this the state, the dhira, being equipoised, तो यह जो स्थिति है धीर वहाँ होनी चाहिए। makes one eligible for practicing Krishna consciousness. वहाँ एक स्थिति है जो आपको कृष्ण भावनामृत में स्थित रखती है। Actually, at that point, then the person can become nishkama.
वहाँ स्थिति पे आप निष्काम बन सकते हैं। No. Whatever comes, he accepts and he utilizes in Krishna service. कोई भी चीज़ आती है वह भगवान की सेवा में लगाएगा। If something doesn't come, then it's fine, it's alright. और कोई चीज़ नहीं आती तो वो बोलता है ठीक है। Because if one is disturbed by things, by situations, so the problem is that even when it's decided already, the mind cannot let go. तो अगर हम ये सोचते भी हैं और यह निर्णय करते हैं पर मन कभी नहीं मानेगा। And such person, then he is disturbed basically 24 hours a day over what did I do wrong? No, how could I have done it such a way so then I wouldn't lose it. पर अगर वह आसक्त होगा तो वह विचलित होगा और पूरा समय सोचता रहेगा कि ऐसा कैसे हो गया। And because of that disturbance of the mind, he cannot do anything. और क्योंकि यहाँ उनका मन विचलित है इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे। There was one businessman in Kolkata. एक व्यापारी थे कोलकाता में। I've heard about it. And he used to come to do his business always every day at certain time. 9 o'clock he would come into the office. और वह रोज अपने व्यापार करने के लिए 9 बजे कार्यालय में आते थे। As soon as he comes into the office, then everybody very busily try to attend. So he's talking on the phone, he's talking with people, having some meetings, all at the same time. Very intense. तो जब वो कार्यालय में आता था तो वो बहुत व्यस्त रहते थे। कभी फोन पे बात करते थे, कभी लोगों के साथ चर्चा करते थे। And while he is working intensely like that, then he does that until 10 o'clock for 1 hour. 1 hour. और वह 1 घंटे तक पूरा व्यस्त रह के सबके साथ यह कार्य करते थे। 10 o'clock is okay. 1 hour is over. 10 o'clock, he just packs up and goes back to home. और जब 1 घंटा खत्म होता है तो वह अपना बैग के वापस चले जाते हैं। Something didn't get finished, tomorrow. और अगर कुछ चीज़ बाकी रह गई तो वो कल करेंगे। He goes home and he writes Ram's names. So he's focused on spiritual life. और वह घर जाता है फिर राम का नाम लिखता है। He forgets about the business. Okay, business is from 9 to 10. That's it. वह अपने व्यापार के बारे में भूल जाता है और उसको याद है कि सिर्फ व्यापार 9 से 10 के बीच में करेंगे। He doesn't take any phone calls and nothing. Just he doesn't care. वह कोई फोन भी नहीं उठाते और वो कुछ बारे में सोचते नहीं हैं। So there are other people who care about that. पर जो दूसरे व्यक्ति है जो इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। So and then when they need to make some decision, so they need his agreement. So for that, it's very rajasic that 1 hour. पर क्योंकि उनको कोई निर्णय लेना है और इसके लिए उनकी सहायता चाहिए तो उनके लिए बहुत राजसिक कार्य है ये। But he has 23 hours to take care of his spiritual life, take care of his family, and get proper rest. पर उनके पास 23 घंटे हैं अपनी परिवार को संभालने के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन को संभालने के लिए और अच्छे से व्यायाम करने के लिए। And I heard that he used to be very rich. और मैंने सुना कि वह बहुत संपत्तिवान थे। So it's possible to do it. तो यह संभव है। But he may think, I am here for 1 hour, have that much money. If I be for 2 hours, I get double. पर वह सोच सकते थे कि मैं यहाँ पे 1 घंटे के लिए हूँ और मेरे को इतना सारा लक्ष्य मिल रहा है। अगर मैं 2 घंटे कार्य करूँगा तो मुझे बहुत सारा लक्ष्य मिलेगा। That's due to attachment. यह आसक्ति है।
I have something, I'm attached to it, I like it, I want more. मेरे पास कुछ है और मैं उससे आसक्त हो गया हूँ और अभी मुझे ये चीज़ बहुत सारी चाहिए. And because we are attached, we don't see that it doesn't work like this. और हम क्योंकि आसक्त हो गए हम सोच नहीं पाते कि ये ऐसे नहीं चलेगा. So, if we can overcome the attachment and if we can develop respect for everyone, then things will be much easier for us. Life will go much nicer for everyone. पर अगर हम आसक्ति को भेद पाए और हम दूसरों के प्रति आदर भाव रखें तो हमारे लिए यह जीवन बहुत आसान बन जाएगा. But unfortunately, this is not what's nowadays not being practiced. पर दुर्भाग्यवश यह आजकल नहीं होता. Now, even in the schools, then the main thing is that you have to understand that you are alone and you have to work hard to prove that you are good. तो आजकल विद्यालय में भी यही सिखाया जाता है कि आप अकेले हो और आपको संघर्ष करना है यह बताने के लिए कि आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हो. Friendships and relationships make you weak. और जो दोस्ती है और बहुत सारे संबंध हैं वो आपको कमजोर बनाएंगे. So that you see the priority, everything is for me, I and mine. तो सब कुछ मेरे लिए, मैं और मेरा. Don't care about others. That's what they teach. दूसरों के बारे में मत सोचो, यही वो सिखाते हैं. You have to be the best. आपको सबसे अच्छा होना है. But it's not true. पर यह सच्चाई नहीं है. You cannot be the best anyway. There's always somebody better than you. आप सबसे हर बार श्रेष्ठ नहीं रह सकते. कोई ना कोई आपसे अच्छा रहेगा ही. So that approach is very pointless, very useless. तो यह सोचना यह सोचना व्यर्थ है. And in fact, now any amount of material things cannot account for to have a good friend. और बहुत सारी संपत्ति भी एक अच्छा दोस्त नहीं दे पाएंगे. And on the other hand, now even if you have now crores of rupees and you have no friend, what's the use? और अगर आपके पास बहुत सारे लक्ष्मी है पर आपके पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है तो क्या फायदा. So developing relationships is the most important. तो संबंध बनाना सबसे आवश्यक है. And like yesterday we were talking, और जैसे हमने कल चर्चा की थी, दराते प्रतिगृह्णाति गुहिमाखि पृच्छते भुंक्ते भोजयते. यह श्लोक पे चर्चा की थी. Those are the exchanges, now 6 exchanges in the relationship which develops the relationship and maintains the relationship. यह 6 चीजें हैं जो संबंध बनाती है और संबंध को रखती है. So doing this, it will lead us to that we will be able to respect everyone. ये करने से हम दूसरों के प्रति आदर भावना जागृत कर पाएंगे. Respect everybody's decisions or respect the personality. और इससे हम दूसरों के निर्णय को भी आदर भावना या उनके गुणों को भी आदर भावना दे पाएंगे. Like what determines a friendship? क्या निर्णय करता है कि ये दोस्ती है? To have a friendship with someone, what must be there? अगर किसी के साथ दोस्ती है होना चाहिए इसमें क्या आवश्यक है? Exchanges. Okay, before it starts, now there is no friendship yet. How to develop a friendship? Trust. You should have trust with each other. Okay, you don't have trust yet. There's a new person and you feel you want to develop friendship with that person. Respect that person and the last thing. Okay, so translate it and then let's see. तो महाराज का प्रश्न यह है कि अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो हमें क्या करेंगे तो हम पता चलेगा कि हम उनके दोस्त बन सकते हैं. Okay, knowing more about him, alright. उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके. His likes and dislikes. His likes and dislikes, okay. वह क्या अच्छा लगता है उनको क्या बुरा लगता है ये जान के. We will see that people is
people's association इस group of the people को कैसे लोगों के साथ वो रहता है? Okay. वहाँ कैसे लोगों के साथ रहता है? From your saying? Hate each other. Hate होना चाहिए. Faith. श्रद्धा. Okay. Now, see, first of all, then, okay, I want to have friendship with you. Okay. But friendship is always two ways. If I want to have friendship with you and you don't want to have friendship with me, there's no friendship. It cannot be. तो अगर मुझे आपसे दोस्ती करना है पर आप मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं तो व्यर्थ है दोस्ती करना, मैं दोस्ती नहीं कर पाऊंगा. So if I want to have friendship with you and you want to have friendship with me, then we can have a friendship. पर अगर आपको मेरे साथ दोस्ती करना है और मुझे आपके साथ दोस्ती करना है तो ही हम दोस्ती कर पाएंगे. But how deep the friendship will go? पर यहाँ कितनी घनिष्ठ होगी? It depends on how much I can respect your personality and how much you can respect my personality. And then, what's the common principle between these two? Then this is the depth of the relationship. पर ये घनिष्ठता इस पे निर्भर करती है कि मैं कितना आपके व्यक्तित्व को आदर करता हूँ, आप कितने मेरे व्यक्तित्व को आदर करते हैं. If I say, okay, I want to be your friend, but you have to be like this, you have to change this, you have to do this, and you cannot do this. पर अगर मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं, आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है. So many conditions. बहुत सारी शर्तें. Then what kind of friendship will be there? तो ये कौन सी दोस्ती है? Not much. So we have to be able to accept the person as he is and respect that. तो हमें स्वीकारना है उस व्यक्ति को कि वह ऐसा ही है और फिर उनको आदर देना है. No, whatever it is for good or bad, but no, respect. ये अच्छा है कि बुरा है, हमें आदर तो करना है. And then, when we are able to do that, then you can have some friendship. और अगर जब हम ये कर पाएंगे तो हम कुछ दोस्ती बना पाएंगे. Maybe your friends does something which you don't like. कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके दोस्त कुछ करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता. But okay, he wants to do that. So you still have some respect for that. Okay, that's his desire. He's doing it like that. I wouldn't do it. But he is a person. He has a free will. He can do it. If he likes it, okay. तो हमें ये सोचना चाहिए कि ओके वहाँ एक अलग व्यक्ति है, उसकी कोई अलग इच्छा है और वो करना चाहते हैं तो उसको करने दो. हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमें उनको आदर देना चाहिए. But in time, as the relationship deepens, and then the trust and the faith is developed in the relationship. पर समय के जाते हुए जैसे जैसे हमें श्रद्धा और विश्वास बनता है दोस्ती में. So then you may see that your friend does something which is wrong. और तब आप देखते हैं कि आपके दोस्त कुछ कर रहा है जो गलत है. Based on the strength of the relationship, you can tell him, don't do it. और आपके संबंध के आधार पे आप बोलेंगे मत करो. This is bad. ये गलत है. Because of the faith he has in you, the trust he has, he understands you are not telling him that because you are envious or you are trying to tell him something which is just because you don't like it, then he should not do it. और जब भी विश्वास होगा तो वो यह नहीं सोचेगा कि आप उनसे ईर्ष्या में इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि आप उनसे अलग क्योंकि आप चाहते हैं इसलिए आप बोल रहे हैं. He will understand it very seriously because you are my friend and I understand that you try to make me better and that what I'm doing is wrong and therefore I will listen to you. वहाँ समझेगा कि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरा अच्छा चाहते हो, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो. I have seen there were two boys, very good friends. मैंने देखा है दो लड़के थे, बहुत अच्छे दोस्त थे. Then at some point, the one boy, he did something really bad. एक समय पे एक लड़के ने बहुत बुरी चीज़ की.
Now, his friend, when he came to know, then it was in the temple room, and he just punched him. तो जब उनके दूसरे दोस्त को मित्र को पता चला तो वहाँ मंदिर के हॉल में उनको जाके एक घूसा मार दिया. Right in the face. डायरेक्ट मुंह पे मार दिया घूसा. He got shocked. What? You are my friend, and you are doing this to me? और वो एकदम घबरा गया और वो सोचने लगा कि आप मेरे दोस्त हो, आप ऐसा कर सकते हैं. But he didn't say that. No, he just got shocked, and then he was speechless. पर वहाँ एकदम स्तंभित हो गए और कुछ बोल नहीं पाए. But he understood. He knew that he got it because he did something bad. पर वो समझ पाए कि उन्होंने कुछ गलत किया, तभी उन्होंने ये चीज़ हुई. And the other boy, being his very good friend, he just gave him a lesson that you should not do things like this. और उनके जो दूसरे मित्र थे, क्योंकि वो अच्छे मित्र थे, इसलिए उन्होंने सबको सिखाने के लिए उनको ऐसा किया. The boy, no, well, it took him some time, not took him, no, the rest of the day, but he was very thankful for that. तो उन लड़के को कुछ देर लगा पूरा दिन समझने में, पर उनके अंदर में वो समझ गए. He was able to be thankful because he understood that he is my friend and he cares about me. And because I did something really bad, I needed to wake up from this. No, this was the way. तो वो समझ पाए कि वहाँ मेरे मित्र हैं और यह मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, मुझे इनसे कृतज्ञ होना चाहिए. That's friendship. यह मित्रता है. Not, oh, you did something bad, no problem, everybody does something bad, so then yeah, go for it, no problem. पर अगर आप यह सोचेंगे कि यार मैंने गलत किया और सबको गलत कर रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं आप करो. Oh yeah, you are a real friend, you are not judging me, you let me to do any nonsense, that's fine, thank you. पर आप बहुत अच्छे मित्र हैं, आप मेरे को अच्छे से समझते हैं, धन्यवाद. There was Srila Prabhupada was saying one story that there was a man and he had killed someone. श्री प्रभुपाद एक वार्ता बताते हैं जिसमें वो बताते हैं कि एक व्यक्ति था और उन्होंने किसी की हत्या कर दी थी. And he was sentenced to death. और उनको मृत्यु की सजा हुई थी. But before that, he wanted to speak with his auntie. पर मृत्यु के पहले वो अपनी सगे आंटी से बात करना चाहते हैं. So his last wish, okay, fine. So then they arranged the meeting with him and the auntie. तो उनकी क्योंकि आखिरी इच्छा थी, तो उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने मीटिंग अरेंज की. Then, the prisoner, he said, come closer, I want to whisper something into your ear. तो जेल में वो अपनी आंटी से बोले कि पास आइए, मुझे आपको कुछ खाने बताना है. And then she gave the ear, yeah, what? And he bit off her ear. और आंटी ने अपना कान दिया और उन्होंने जोर से मारा. And the auntie, why did you do this to me? What did I do? और वो आंटी जोर से बोली, मैंने क्या किया, मुझे ऐसा क्यों किया आपने? And he said, it's your fault. Everything is your fault. और आपकी सब गलती थी, इसलिए ऐसा किया मैंने. Because when I was young, I did some nonsense, and you never corrected me. और जब मैं छोटा था, मैंने कुछ गलत चीज़ की, तो आपने कभी मुझे सुधारा नहीं. You did not stop me. You let me to do nonsense, and because of it, I became criminal. आपने मुझे नहीं रोका और मैं गलत चीज़ करता गया, इसकी वजह से मैं अपराधी बन गया. If you would have corrected me at that time, I wouldn't be here now on the death sentence. अगर आपने मुझे उस समय पे समझा दिया होता और रोक दिया होता, तो मैं भी यहाँ पे नहीं होता. So sometimes, we may think how great we are that we let our friend or our children to do whatever they want. तो कभी हम सोचते हैं कि हम कितने बड़े हैं, हम अपने बच्चों को जो चाहे वो करने देते हैं. But there is a good chance it's going to turn against us very badly. पर यह संभावना है कि ये हमारे खिलाफ ही कुछ समय के बाद हो जाएगा.
So good friend cares about his friend. तो जो अच्छा मित्र है वो अपने दूसरे मित्र के बारे में सोचेगा. And if he does something wrong, maybe he will maybe punch him. और अगर वो कुछ गलत करता है तो गुस्सा भी मार सकता है. That's due to the friendship. यह मित्रता है. So this is a relationship, knowing that you have somebody who cares about you. तो इसको बोलते संबंध. कोई है जो आपके बारे में सोचता है, आपकी परवाह करता है. So that relationship, it's beyond any measure of any money anywhere in the universe. तो वह संबंध कोई भी लक्ष्मी पूरे ब्रह्मांड में उससे परे है, उससे ज़्यादा है. And the perfection of such relationship is between the Jiva and Krishna. और यह पूर्ण संबंध जीव और भगवान के बीच में है. So everybody can develop that. और हर व्यक्ति यह गुण अपने में ला सकता है. But we have to minimize our attachments to the material world. पर हमें सारी आसक्ति छोड़नी होगी. For material things. सारी भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति छोड़नी होगी. And then develop the relationship among the Vaishnavas, sadhu sangha. और हमें वैष्णव के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहिए, साधु संग करना चाहिए. Then we can progress. तब हमारी प्रगति होगी. And the material necessities we will accept as whatever is there, and no need to over endeavor for something which is very difficult to achieve. तो अगर because of our relationship, being satisfied in the relationship, having good friends, then there is no need to really over endeavor for material things which will be very difficult to achieve. तो अगर हम ये संबंध में अच्छे से संतुष्ट होंगे तो हमें कोई बहुत चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी. See, it's much more satisfying, if you are with your friend and then just sitting on the grass and talking, than going alone into some your own car and then showing off. तो ये बहुत अच्छा है, बहुत संतुष्टकारी है कि आप अपने मित्र के साथ कहीं पे बगीचे में बैठ गए और उससे बात कर रहे हैं. जबकि हम दूसरी जगह देखें कि आप अकेले जाते हैं अपनी गाड़ी को सबको दिखाने के लिए, तो वहाँ आपको इतनी संतुष्टि नहीं मिलती. Hare Krishna. Any question? Yes? Maharaj, what was so subtle behind Hiranyakashipu demanding respect, not giving respect and insulting others? But what is that so subtle? हमारा ये प्रश्न है कि इतना क्या सूक्ष्म चीज़ था, सूक्ष्म चीज़ क्या है जिसकी वजह से हिरण्यकशिपु दूसरे जीवों को आदर नहीं कर पा रहा था, भगवान को आदर नहीं कर पा रहे थे. See, it wasn't very subtle, no, because that was the false ego, that I am the controller. Now, because of the yuga he appeared, because of the power, the ability to do the austerity, then he thought by doing so, having the lifespan and everything, I can achieve everything by my own endeavor. So to lord over it. Yes, but just to the extreme. Everybody wants to lord over something, but he felt that there is a capacity to lord over the whole universe. He was an extremist. Yes. तो महाराज का उत्तर यह है कि यह इतना सूक्ष्म भी नहीं है, यह मिथ्या अहंकार की वजह से है. उनके पास इतना शक्ति था और वह युग भी ऐसा था जिससे उनको ये मिथ्या अहंकार आ गया और वो समझ पाए कि मैं सब कुछ नियंत्रण कर सकता हूँ. He had the idea that he could have everything, and he got attached to that idea and he would not give it up. वो उनके पास ये सोच थी कि उनके पास बहुत शक्ति है और वो कुछ भी कर सकते हैं. And then he tried to get it by any means, literally. और वह चीज़ प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे. No, and he would not be sharing it with anyone. और किसी के साथ वह चीज़ बांटेंगे भी नहीं. He was attached with his own ideas and thoughts. Right. Yes. He felt capable. तो वह सोच रहे थे कि मैं ये सब करने के लिए सक्षम हूँ.
In Kali Yuga, nobody feels capable because no, we are not capable of anything. तो कलयुग में यहाँ कोई नहीं सोचता कि मैं सक्षम हूँ, क्योंकि हम सक्षम ही नहीं हैं। But you see, no, later on Ravana, तो हम जैसे देखते हैं कि उसके बाद रावण also big demon, no, that he felt also capable, build a staircase to the heaven, no, and things like that. तो हम देखते हैं कि रावण को भी लगा कि मैं सक्षम हूँ, उन्होंने स्वर्ग के प्रति सीढ़ी बन का रचना किया और बहुत सारी चीजें की। And he also felt, I can destroy Vishnu. और वह भी यही सोच रहे थे कि मैं विष्णु को मार सकता हूँ। So when he was preparing for fight, and he needed money, तो जब वो युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे और उनके पास लक्ष्मी था, So such people are so that they only love themselves. right? Right? So like and if see the blindness of the attachment is such that okay, somebody took him to like a mountain of gold. And he shaken that mountain. Ravana. Well, Ravana came to the mountain of gold and he asked, where is the gold coming from? Oh, this is the earring of Hiranyakashipu. Oh, okay. So he sees as a mountain and Hiranyakashipu got destroyed by Vishnu. Ravana, who is so small compared to him, what's going to happen to him? No, I am more powerful, I can get it. That's attachment. You won't learn, right? Because of attachment, you don't want to hear that you are less capable. That's what happened to Ravana. Otherwise, he should have immediately discovered that if Hiranyakashipu didn't make it, he was much stronger than me, how am I going to make it? तो हमारे उत्तर देते हैं कि रावण भी बहुत छोटे थे जब उनको सोने का पाठ मिला, पता चला कि ये तो हिरण्यकशिपु की कुंडल थे। तो हम सोच सकते कि हिरण्यकशिपु इतना बड़ा था, वो विष्णु को नहीं मार पाया, तो रावण कैसे मार पाया? रावण कैसे मार पाएगा? Sorry. पर रावण क्योंकि वो आसक्त थे, इसलिए सोच रहे थे कि नहीं मैं सक्षम हूँ, विष्णु को मार सकता हूँ। And you see how relationship, the friendship, right? So-called friendship is very important. You see in Mahabharata, then Duryodhana, many times he thought to give up to fight with Pandavas, fight with Krishna. Shakuni never let it happen. Like when Krishna showed the universal force to him, oh, come on, I cannot fight him. Shakuni, no, don't worry. This is just like he's showing some mystic powers, this, that kind of like, you are more powerful than him. Oh, okay. So that's how influential he was on Duryodhana. No? So he called himself as a best friend. But actually Shakuni was there to destroy him and the whole dynasty. So because of Shakuni, he was the best friend of Pandavas. No? Because he led Duryodhana to complete destruction. If Shakuni wouldn't be there, there is no war. That was that simple. तो हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि महाभारत में भी दुर्योधन ने काफी बार सोचा कि वह कृष्ण ने पांडवों को नहीं मार पाएगा और युद्ध नहीं करेंगे, तो क्योंकि शकुनी पता था कि नहीं आप कर सकते हो, ये सब एक सिद्धि है और आप कर सकते हो, उसकी वजह से दुर्योधन ने युद्ध किया था। So you let somebody close to you who pretends to be your friend, but actually no, he is like a snake, then you will be destroyed. अगर आपके निकट में कोई है जो आपका दोस्त बनने का नाटक कर रहा है पर असल में वो सांप है। He nurtured that poison unto Duryodhana because he was envious of Pandavas. I mean, what was the reason he wanted to, have a destruction and Shakuni? divide them? Well, okay, there was a reason. तो कोई कारण था जिसकी वजह से शकुनी ने ऐसा किया। At one point, then Duryodhana and Bhima, they were fighting, and then nobody was really better. So then they started to insult each other. तो एक समय पे दुर्योधन और भीम एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे और वह दूसरे को मार नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे की अपमान करना चालू कर दिया। And at the time, then Duryodhana, he insulted Bhima, he said something,
And Bhima said something that I think he said, how was it? That you are a mother of a widow. तो एक समय पे दुर्योधन ने भीम को बताया कि आपकी माँ विधवा है. So, what? I mean, that's like a big insult. तो भीम को बहुत बड़ा अपमान लगा ये. So what happened? Gandhari, before she got married, then the chart was not correct, not good. She had to get married to banana tree first, then the second marriage will be good. तो जब ऐसा हुआ कि गांधारी का जो नक्षत्र था वो सही नहीं था, तो इसलिए उनको दूसरा विवाह करना. But that was a family secret. Nobody knew about it. पर किसी को ये चीज पता नहीं थी. Even Duryodhana didn't know anything. पर दुर्योधन को भी नहीं पता था. So then he was furious and he figured out, no. So who spilled the beans, right? Who told that? The secret. How come now Bhima knows? तो वो सोचने पड़ गई भीमा को कैसे पता चलेगा. So then he made a plan. All the relatives he invited for a celebration, some feast. तो उन्होंने षड्यंत्र रचा, उन्होंने सब परिवार वालों को खाने में दावत पे बुलाया. And then he let everybody in the dungeon for the feast. He closed the door and let everybody die. He was giving one meal for one person, and there were like hundreds of people there. तो उनका ये षड्यंत्र है कि दावत पे बुलाएंगे और सबको खिला के मार देंगे. So they knew they are going to die. So now Shakuni's father, he said, okay, you take the meal, you survive. तो उनको पता था कि वो मर जाएंगे, पर शकुन ने बताया कि आप खाइए, आप बच जाएंगे. And you take revenge. You destroy the whole dynasty. और आप इसका बदला लीजिए और पूरी जो डायनेस्टी को मार दीजिए. And he also said, no, when I die, from my knuckles you make the dice. They are magical. Whatever you want, it will be there. और जब मर जाऊं, आप मेरी अस्थियों से एक चीज बनेगा जिससे आप मार सकते हो. So I don't know exactly how he got out afterwards, but he was the one who then developed friendship with Duryodhana, and he pretended, the whole time pretended, but he had in mind revenge, only revenge, destroy him and the whole dynasty. Krishna knew about it. शकुन के मन में था कि कैसे सारे कौरवों को मारना है. So, Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, जय निताय गौर प्रेमानंद.